Good morning, everyone. I hope you guys can see me and hear me. Please write yes in the chat. Great. Thank you, Imranji. Thank you, guys, for confirming. So, welcome everyone. Welcome for the morning session. जैसे कि हमने कल निफ्टी पता ही है, हमें कल हमारा निफ्टी एक्सपायरी था, राइट? एंड even though having a nifty expiry, we did not had that great momentum in the market, right? अगर आज भी मार्केट ओपनिंग का बात करें, so it's sort of flattish to negative only, like minus 11 points downside, right? So all in all, market abhi filhal, from yesterday it's trading sort of sideways, right? एकदम range में move हो रहा है, not even sideways, एक range में move हो रहा है of nearly around 100 points का ही range है, you know. So यहाँ पे एक trade setup बनना भी sort of risk to reward favorable नहीं कर रहा है. And coming back to yesterday's commodity session, guys, जो भी हमने target दिया था on the crude oil, it made a high of 155 and हमें उससे भी ऊपर गया था, but हमारा target जो था 155 का, we had to exit from the position by 150 का only. And I hope जिन लोगों ने भी कल के commodity expiries में trade किया होगा, they would have made a good sort of profit yesterday. So yes, keep joining our commodity session and get the profitable trades out there as well. So let's talk about the stocks that we can focus on for sort of 2-3 days. So you can definitely focus on Shriram Finance, right? अगर श्रीराम फाइनेंस आप फोकस में कर सकते हो for 2-3 days, trading point of view, for delivery point of view, I would say. अगर श्रीराम फाइनेंस का अगर आप चार्ट भी देखोगे, एक 590 का एक जो रेंज था, लेवल, इसको भी इसने सरपास किया है, राइट? तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है श्रीराम फाइनेंस, जो कि आज इसमें अच्छा खासा फॉलो बाइंग भी दिख रहा है, राइट? 3 से इसमें अच्छा खासा एक हमें अपसाइड देखने मिल रहा है, आज भी इट्स नियरली 2% अपसाइड, राइट? तो यहाँ से 611 का लेवल्स तो इजी दिख रहा है, राइट? अगर देखें तो हमने मोतीलाल ओसवाल कंपनी की तरफ से भी, राइट, मोतीलाल ओसवाल से भी इसका रिकमेंडेशन आया है, राइट, फॉर 617 टारगेट. 611 यहाँ से इजीली दिख रहा है गाइस, सो आप डेफिनेटली श्रीराम फाइनेंस देख सकते हो, राइट? और 617 निकलता है तो इससे भी और 630 वगैरह का भी टारगेट दिख रहा है. You can definitely focus on Shriram Finance for the technical point of view. Meanwhile, we will have Deven sir, our expert, technical expert, who have joined us for the morning trading session, right? So Deven sir, in depth बात करेंगे मार्केट के बारे में, right? जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से, so we already have Deven sir joined with us, and he'll definitely talk about all the indices, including Nifty, Bank Nifty, Sensex, and for the coming week also कि क्या तेजी देखने मिल सकती है किसी स्टॉक्स में, जैसे कि मैंने अब श्रीराम फाइनेंस में बात किया, राइट? If there will be any other stock that looks very positive, Deven sir will definitely going to share the same with you guys. So Deven sir, let me know if you are good to go. Yes, Vinash, I hope I am audible. My screen is visible and my video is visible. Absolutely, Deven sir. Your screen is on, your screen sharing is also on, you are audible too. You can, start the session. I'm just handing over the session to you. Okay, great. So we are good to go. We will start with Nifty, then Bank Nifty will cover Bank Nifty as well. And after that, there are stock-specific actions today out there into the markets. The broader markets are trading well from last 2 trading sessions, including today. So I think there will be many more queries outcoming. So we'll try to solve maximum queries as well. And definitely we'll look at the levels and what are the important levels for the index as well. And in the coming week, it's a monthly expiry. It's a February month end coming out there, and there will be a monthly expiry for Sensex and BankX on Tuesday, and all the other indices having NSE indices having their expiry on Thursday. So a lot more action is about to come in the coming week, and we'll try to get ourselves ready for the action in the next week. We have a holiday on Wednesday, but definitely on Tuesday and Thursday there will be a lot of action.
and we will try to capture many of things out there. So we'll start with Nifty for today. Nifty currently it is trading around 20 to 900 levels. On the lower side, 20 to 800, 20 to 750 is acting as a strong support for Nifty. Until and unless it is holding above that levels, I think shorting at this particular level should be avoided. If it breaks 20 to 800, 750 levels, then only we can see some more weakness into the market. Till then, it is kind of a trading into a range of 20 to 800 on the lower side, on the higher side 23,050. That is a kind of a range it is trying to hold. And I think if any of the move comes, if it surpasses any of these particular levels, on the higher side 23,050 and on the lower side 22,850 zone, if it surpasses if index surpasses this particular levels on the either side, we can see a good up move or down move accordingly. But at this particular levels, shorting will not be a favorable, because it is trading very close to its supports. On the higher side 23,000, 23,050 is a small resistance. If it crosses that particular resistance, then we can see a up move towards 23,333. Right. So, so this is a kind of a formation we have seen from many days. This was the intraday chart, but I'll just share the daily chart. So, if we can see the consolidation of Nifty on daily chart, right? So, last from 5 to 6 trading sessions, we have seen a sideways move, and Nifty comes around 22,900, 950 levels and closes. And that is the closing levels of Nifty. Once Nifty surpasses and closes about 23,050, we can see a good up move. And if it failed to hold 22,800 on closing basis, we can see a further correction. But overall, we have seen that this support of 20 to 800 is acting as a strong support, and a bounce back is seen. So we only require the follow up buying from the resistance level. If Nifty crosses 23,050, and if we see some follow up move and follow up buying, then we can say that Nifty can mm, further move towards 22,000 23,333 levels. So this is about Nifty. This is trading sideways and into a range. So until and unless it do not surpasses the range, we should try to trade in this particular range itself. Currently, it is trading around 20 to 900. We need to wait for any particular action right now. And definitely, if there is any index trade, I will try to recommend that as well. We will cover Bank Nifty as well. So this is a future levels. Okay, so again, Bank Nifty, it is trying to hold 49,000 levels. 2 days prior, we have seen that Bank Nifty closed above 49,500. It tried to recover, but Nifty was not trading about 23,050 levels, and it haven't crossed the resistance. And that's why on the next day, we have seen some profit booking into the banking stocks and Bank Nifty. And Bank Nifty formed an inside bar candle yesterday. Today again it is trading into the we can say Wednesday's big bullish candle. It is trading into that particular level itself. So I think on the higher side 49,500 will again act as a resistance for this particular index. On the lower side 48,700 will be acting as a strong support for this particular index. So this is one of the range. Comparatively, Nifty is more weaker than Bank Nifty, because we have seen that Bank Nifty has made a low of around 47,900, but it is far away on the higher side, trading above that particular levels, whereas Nifty has made a low of around 22,786, and it is very close to that particular levels. So we can see that comparatively Bank Nifty is stronger. So if rally sustains on the higher side, then we can see that banking stocks and some banking counter and Bank Nifty will lead the overall index, and Nifty will follow that. And if we see a breakdown and
if Nifty closes below 22,800, then we can see that Bank Nifty will follow on the lower side to the Nifty. So this is all about Nifty and Bank Nifty. I hope we are clear with our levels. So what we'll do is we'll try to take some queries, and also I have some stocks on my radar for intraday as well as some CDS. So if I find any, we'll definitely recommend CDS as well as intraday calls. Till then, we can try to take some queries, Avinash. Hello. Hello. Yes, I think you was on mute, Avinash. Sorry. Yeah. So जैसे कि guys हमें देवेन सर ने already market का outlook बता दिया, right? So Deven sir, before we move ahead with the stock queries, right? Do we have any delivery or BTST idea for today? Yes, Sorry. as I said, Avinash, I have some stocks on my radar, but definitely, if there is any buying opportunity, I will definitely recommend. Till then, we can take some one or two queries, and I'm so also there are some stocks on my radar, so I'll recommend accordingly. Great. So Deven sir, we had suggested Bajaj Finance for the BTST point of view. I guess the day before yesterday, so it was definitely not a BTST anymore, but people are still holding क्योंकि जैसे कि हम बजाज फाइनेंस को काफी समय से रिकमेंड कर रहे हैं, राइट? काफी इसमें तेजी दिखने मिल रही है हमें बजाज फाइनेंस स्टॉक में. So what is your view on it? आई थिंक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ये दोनों स्टॉक है जिन्होंने एनबीएफसी सेक्टर का रैली को थोड़ा सा लीड किया था. स्टार्टिंग से ही ये दोनों स्टॉक्स जो है वो अच्छे मूव दिखा रहे थे, और उसके बाद हम लोग ने देखा कि कुछ जो मिड कैप और स्मॉल कैप में एनबीएफसी स्टॉक्स है वो अच्छे मूव करने लगे. सो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस टेक्निकली अच्छा सेटअप है. आज के दिन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है विथ मार्केट्स, लेकिन वैसे चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बेरिशनेस नहीं है. तो ओवरऑल जो अगर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टॉक भी आप रख सकते हो. तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर आएगा अराउंड 8,000 लेवल्स, वो स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं. अगर आपका थोड़ा सा पोजिशनल काइंड ऑफ व्यू है तो 8,200 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं. उसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए. 8,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. बजाज फाइनेंस हम लोग चार्ट पे देख पा रहे हैं 20-day exponential moving average is very near to that particular level. So if it closes below 8,200, then some further profit booking can be seen. लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म काउंटर भी होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए. So Deven sir, sorry for the inconvenience. Could you please repeat once again the levels for Nifty and Bank Nifty, the support and resistance, because Yes, definitely. I'll again let you know the levels. So on the higher side, 23,050 is the resistance for Nifty, and on the lower side, 22,800, 22,750 is a zone which will act as a support for Nifty. So these are the two levels one we should look at for, and any decisive move on the other side will help us to take trades on that particular side. Great. So guys, we have pinned the levels for Nifty. Please make sure you check it and look for the entire day while if you are trading into it for the monthly view. What is your view on NHPC BTST point of view? So yesterday, Deven sir, we had suggested NHPC, I guess so. I think the stock is up by 2%. One should definitely book their profits. अगर BTST में 2% से ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो आप बुक कर सकते हो. अगर किसी को थोड़ा होल्ड करना है या तो फिर थोड़ा सा ट्रेल करना है स्टॉप लॉस, तो डेफिनेटली अपने कॉस्ट के ऊपर लेके आओ स्टॉप लॉस को, सो दैट ये काउंटर में आप लॉस ना करो. ऑन द हायर साइड 82.50 एक रेजिस्टेंस है, तो 82.50 आएगा तो पक्का बुक कर लेना. तब तक आप होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट के ऊपर लेके आ सकते हो. राइट. सो जैसे कि ये क्वेश्चन था नजमा बेगम जी से कि एनएचपीसी बीटीएसटी, तो नजमा जी सॉरी, हमने एनएचपीसी का बीटीएसटी कल शेयर किया था, राइट? आवर बाइंग रेंज वाज ऑफ 78 समथिंग, with a stop loss of 75. The target we suggested was of 87.
So I guess currently it's trading near 81.67, right, Devendra? Right. So if you want to book profits, you can definitely go ahead and book your profits. And if you want to hold, please tail your stop loss so that at least from there you will take something from this trade, right? So this is the update from the NHPC BTSC that we had shared yesterday. Ashwinji, definitely we will share the intraday trade for today. There are a couple of stocks that Devin sir have already shortlisted, and we are just waiting for the right entry, right? So we will definitely share before we end the session, right? Meanwhile, we'll take one or two queries. What is your view on Chambal fertilizer? Could you please share the levels for the same as well? Okay, again, Chambal Fertilizer is a fantastic stock. It has given a strong breakout. I think this stock is trading at 52 weeks high. In fact, it is trading at all-time high levels. जब मार्केट इतना नीचे है, अगर ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक को. स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए. Those who are holding for short to medium term purpose, I think इनका स्टॉप लॉस अभी 555 के आसपास रख लेना चाहिए. वही एक ब्रेकआउट लेवल्स है. उसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक नीचे आता है तो आपको बुक कर लेना चाहिए आपका प्रॉफिट, अगर लोअर लेवल्स पे परचेस किया है तो. बाकी तब तक होल्ड होना चाहिए. मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ब्रेकआउट है. हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रिटेस्ट के लेवल्स हम लोग इसमें देखें एंड अगेन ये स्टॉक अच्छा मूव करेगा. सो आई थिंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज गुड. 555 कैन बी द स्टॉप लॉस एंड दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉप लॉस. अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो ही आपको एग्जिट कर लेना चाहिए. तब तक आप होल्ड कर सकते हैं. डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है. एंड दोज हु वांट टू बाय, आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए बिकॉज ये ब्रेकआउट है. यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल नहीं होगा. 550 555 के आसपास अगर रिटेस्ट के आसपास आता है स्टॉक तो वहां पे आप फ्रेश एंटर कर सकते हैं. फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करें. दोज आर होल्डिंग कैन होल्ड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. Avinash, before going forward, I have one CDI call, conviction delivery idea, which we usually recommend. So JSW Steel is one of the counter which is looking good on charts. अगर हम लोग पैटर्न देखें तो एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है यहाँ पे. 984 के आसपास ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली वन कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर काउंटर फॉर CDI. नीचे में हम लोग अराउंड 960 962 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं. एंड ऊपर में ये जो स्टॉक है वो 1015 के लेवल्स तक आ सकता है. तो दिस इज वन ऑफ द CDI काउंटर्स विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड. काफी अच्छा चार्ट सेटअप है. तो आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ ये ट्रेड ले सकते हैं. So guys, we had shared a conviction idea on JSW Steel, currently trading near 984 levels, 984.75, nearly 985. तो आपको करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है at 985 level with a stop loss of 962. The target for the upside will be 1015. So Deven sir, talking about the JSW Steel, I was just tracking the JSW Energy as well, और ये स्टॉक में काफी दिनों बाद एक अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने मिल रहा है. 3-4 दिन से अच्छे खासे फॉलो अप बाइंग्स भी दिख रहे हैं, राइट? एंड इवन टुडे इट्स नियरली 3.3% अपसाइड. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन इट एज वेल? आई थिंक स्टॉक लगातार लोअर लेवल्स पे आ रहा था. लगातार इसमें थोड़ा वीकनेस था. लेकिन ये जो लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का है, जो फॉर्मेशन है उसको निगेट किया है स्टॉक ने. लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस बहुत सारे. मेरे हिसाब से जब तक 515 520 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते तब तक ये स्टॉक में रिवर्सल के जो चांसेस है वो थोड़े कम है. ये बाउंस बैक डेफिनेटली हो सकता है. इट कैन मूव टुवर्ड्स 510 15 लेवल्स एज वेल. लेकिन उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, सस्टेन करता है तो ही फर्दर अप मूव हम लोग 580 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं. बट टिल देन फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है. मल्टीपल रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ. लोअर लेवल्स पे अगर किसी ने बाय किया हुआ या कोई थोड़े से ऊपर के लेवल्स के आसपास अगर कोई फंसा है तो आई थिंक 515 520 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो एग्जिट भी कर सकते हैं. Great. So, Deven sir, continuing with the same questions, so, I was just checking the hotel
tourism hotel sectors, right? And मैंने notice किया, right, even I was checking कि Indian hotels and lemon tree hotels में अच्छा खासा एक momentum देखने मिल रहा है, right? Indian hotel is nearly like 2% upside and lemon tree hotel is 1% upside. तो क्या कारण है? Is there any news? क्योंकि हमने काफी समय से Indian hotels and lemon tree hotels को suggest किया है, and आज ये दोनों stocks में थोड़ी तेजी देखने मिल रही है. So can we have any delivery BTST, or sorry, BTST I'm saying intraday? Can we have any of the trade setups in these two stocks or any of the hotel sector stocks? आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए. स्टॉक में क्या हुआ है, ब्रेकआउट हम लोग काफी टाइम से ये स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड करते आ रहे, राइट? एंड वी हैव सीन दैट द स्टॉक हैज गिवन अ ब्रेकआउट अराउंड 715 नवंबर के आसपास. ये स्टॉक ने वहां पे ब्रेकआउट दिया था और अच्छा खासा अपमूव वहां से देखने मिला, एंड स्टॉक मूव टुवर्ड्स 880 लेवल्स एज वेल. अभी क्या हुआ है, लगातार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के साथ साथ वही लेवल्स फिर से एक बार रिटेस्ट हुए. उसके बाद एक वापस से अपमूव देखने मिला, लेकिन अभी ये रिवर्सल है क्या और इसके आगे फिर से ये स्टॉक ऊपर जाएगा क्या, तो दैट वी शुड वेट फॉर 828 830. यहाँ पे जो हम लोग को दो बार के टॉप्स दिख रहे हैं, अराउंड 20 जैन को एक बार आया था और उसके बाद 5 फरवरी को एक बार आया था. तो जब तक ये दोनों लेवल्स जो है 530 के 830 के आसपास, जब तक वो लेवल्स नहीं निकलते तब तक एक बड़ा मूव आएगा क्या, दैट इज काइंड ऑफ अ डाउट. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं. थोड़ा सा हो सकता है स्टॉक साइडवेज रहे, इस रेंज में ट्रेड करे, कुछ एक फॉर्मेशन बनाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे. तो जब तक ब्रेकआउट नहीं आता कन्विक्शन के लिए वेट कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली ये सारे स्टॉक्स वैसे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, तो व्हाट वी कैन डू, एक इंट्राडे ट्रेड्स वगैरह आप सेटअप देख के कर सकते हो. इंट्राडे में अगर मार्केट साथ देता है, मार्केट अच्छा है, तो डेफिनेटली ये जो है आप ट्रेड ले सकते हो. लेकिन एज ऑफ नाउ इंट्राडे के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है. रीजन बीइंग हम लोग निफ्टी की भी बात कर रहे थे, एंड निफ्टी हैज अगेन रीच टुवर्ड्स इट्स सपोर्ट लेवल्स. 22,800 के आसपास अभी पहुंच रहा है. हम लोग ने जब भी स्टार्ट किया था बात करना, निफ्टी के लेवल्स हम लोग बता रहे थे तो 22,900 के आसपास ट्रेड कर रहा था. तो निफ्टी में अगेन थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है. 23,050 लेवल्स क्रॉस नहीं हो पा रहे. थोड़ा सा वेट करना चाहिए. अगर निफ्टी ये लेवल्स ब्रेक करके नीचे जाता है तो थोड़ा सा और ये हो सकता है कि स्टॉक्स ना चले. सो बेटर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. और जो इंडियन होटल्स के मैंने लेवल शेयर किए वो आप ध्यान में रखिए. Great. So there's a question from Imran Ji. What is your view on Shriram Finance 590 call? 590 कॉल डेफिनेटली अगर आपने कल के दिन में बाय किया होगा तो ये स्टॉक प्रॉफिट में ही रहेगा आपका ऑप्शन. अगर आज के दिन में बाय किया है और थोड़ा सा हायर लेवल्स पे बाय किया है तो आप होल्ड कर सकते हो. ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इंट्राडे के लिए व्यू भी हमें देखना पड़ेगा. निफ्टी में जैसे प्रॉफिट बुकिंग आया है थोड़ा ऊपरी लेवल से, वैसे ही स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है 595 के आसपास से. अगर मैं इंट्राडे चार्ट्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से आज के लो का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए. अगर आज का लो ब्रेक करके स्टॉक नीचे चला जाता है तो आप जो कॉल ऑप्शन है उसमें से एग्जिट कर लीजिए. इट इज अराउंड 578 लेवल्स, क्योंकि आपका कॉल ऑप्शन है और वी आर अबाउट टू मूव टुवर्ड्स मंथली एक्सपायरी. तो हो सकता है आपके जो ऑप्शन हो उसमें थोड़ा सा थीटा डी के रहे. तो व्हाट वी कैन डू इज आप आज के डे लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए. 578 के आसपास का है. उसके नीचे अगर श्रीराम फाइनेंस मूव करता है तो आप एग्जिट कर लीजिए. ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है. एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है. एक सीडीआई कॉल भी हम लोग ने इसमें रिकमेंड किया था. तो काफी अच्छा सेटअप है ओवरऑल. लेकिन अगर आप ऑप्शन होल्ड कर रहे हो सो इट हैज अ रिस्क ऑफ थीटा, एंड दैट्स व्हाई 578 का लो जो आज का है उसके स्टॉप लॉस से आप अपना कॉल ऑप्शन होल्ड करो. ऊपर जाता है प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है. Kotak call 2000. Can you please update on Kotak 2000 call? आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक ओवरऑल अच्छा है. हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन करके एक अच्छा मूव दिखा है. लेकिन अगेन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया
विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छे खासे चले हुए स्टॉक्स है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है हमें। 2000 का कॉल ऑप्शन थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी है अभी के लेवल्स के लिए, तो आई थिंक आपने अगर कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है तो आई थिंक आप 1930 का एक स्टॉप लॉस रखें, उसके नीचे अगर जाता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। अगेन बाउंस बैक आता है, 2000 का कॉल है, थोड़ा आउट ऑफ द मनी है, थीटा डी के पॉसिबल है, तो आप अगर बाउंस बैक आता है तो बाउंस बैक में भी एग्जिट करने की कोशिश करें, आपकी कॉस्ट के आसपास आता है तो भी एग्जिट करने की कोशिश करें। VEDL, Vedanta Limited. ओके जैसे हम लोग ने कहा ना कि मेटल स्टॉक्स जो है ना उसमें एक अच्छा मूव देखने मिला है। इनफैक्ट हिंदाल्को एक अच्छा काउंटर है, काफी अच्छा मूव हम लोग ने लास्ट 3 दिन में हिंदाल्को में देखा है। JSW स्टील हम लोग ने अभी रिकमेंड किया फॉर CDI, सो ओवरऑल इसका भी चार्ट सेटअप अच्छा है। तो वेदांता इसका भी चार्ट सेटअप वैसे अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये कुछ लेवल्स क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मूव दिखेगा। आई थिंक इट इज अराउंड 450, 450 के लेवल्स अगर वेदांता क्रॉस करता है तो एक फर्दर अप मूव टुवर्ड्स 470 भी दिख सकता है। सो ये लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए एंड आफ्टर दैट ट्रेड लेना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल चार्ट सेटअप अच्छा है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर किसी ने बाय किया 430 का स्टॉप लॉस रख ले, फॉर दोज हु हैव ट्रेडिंग फॉर 1 वीक और समथिंग। 430 के नीचे अगर जाता है तो ये फिर से जो है उसका फॉर्मेशन थोड़ा खराब होके नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है, तो 430 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। So Devin sir, like as we are near the end of the session, do we have any intraday trade setup for today? नो अविनाश, हम लोग ने एक ऑलरेडी CDI तो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अभी निफ्टी जो है वो वापस से एक रेंज में ही है और इसलिए इंट्राडे कॉल अभी एज ऑफ नाउ कोई नहीं है। बट डेफिनेटली जो CDI दिया है वो आप ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एंड देयर इज नो इंट्राडे कॉल एज ऑफ। ठीक, okay. So on that note, we will have one more stock query for today. Shri Cement. श्री सीमेंट अगेन, सीमेंट काउंटर्स अच्छे हैं, इवन दिस काउंटर इज गुड, काफी अच्छा सेटअप है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। ये सारे स्टॉक्स जो है ना वो टेक्निकली काफी अच्छे हैं, थोड़ा सा मार्केट के साथ थोड़ा सा साइडवेज और थोड़ा सा वोलेटाइल मूव दिखा रहे हैं। लोअर लेवल्स पे बाइंग भी आती है तो वापस से स्टॉक्स घूम जाते हैं। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर किसी ने परचेस किया हुआ है 27,920 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज करता है तो थोड़ा सा फिर से वीकनेस दिखा सकता है, लेकिन वैसे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक 28,900 के लेवल्स क्रॉस करेगा वी कैन सी अ गुड अप मूव इन दिस पर्टिकुलर काउंटर एज वेल। So great. I guess that's it, guys, from our end. Thank you so much, Devin sir, and thank you guys for joining. So that was it from our end, and we have covered almost all the stock queries for today.